then you are having the houses, income from house property, you are having the houses, means you have to pay tax. तो सर मैं किराए पे दिया ही नहीं, रेंट मिला ही नहीं, कहाँ से टैक्स देगा? इनकम टैक्स सेइंग आई डोंट नो इट, मेरा ये पता नहीं है, तुम देना पड़ेगा. So sir, on what does this tax depend? On what basis? Answer is no. When I asked you why should we pay tax on house property, then Bhargav said rent, and you also agreed rent. But dear students, please remember, tax on house property does not depend only on rent. I'll teach you mathematically बाद में, practically पीछे उठा है, ये तो background है. So rent नहीं होने से भी टैक्स देना पड़ेगा, ये टुकी को था सर. So how it is done? Let me tell you. Income tax on house property calculation depends on annual value of the house property. What is the annual value of the house property? On that, not what is the rent. Rent is only one point. Rent is also taken into consideration, but even if you have not rented, then your tax is there. Because it depends on what? Annual value. Now annual value, what is annual value? I'll teach you the calculations. I'll teach you the calculations of annual value. Okay? I'll teach you calculation of annual value. There are some methods. It depends on where is your house property. Is it in Mumbai or it is in Jaklabandha or Norgao? Is it in Delhi or it is in Guwahati? It depends on the place. Those things, many things are there. I'll take it. So it depends. And what is square feet? What is the house? All many things. What is the rent of the house, nearby house, similar, fair rent? All these things will determine annual value, and then it is known as gross annual value. Then from gross annual value, you deduct which came out just now in mind. You pay some money to the municipal tax, no? Property tax. वो भी इसमें आ जाएगा. That will come. How? The gross annual value less municipal tax. So what coming is net annual value. From net annual value, again some deductions are there. Let me not take it in detail now. I'll take it in practical class. So this is how house property will be taxable. So अभी देखो house property जोर जोर से थोड़ा पढ़ो तो चिराग, मीनिंग सब सुनेंगे यहाँ से. फर्स्ट पढ़ा. 1961 meaning income earned by a person from the ownership of a building and rent attains to it. For example, a house, shop, office, rents or go down, it taxed under the head income from house property. So your building is attached to a office you have given on rent. किसी ने भाड़ा पे ले लिया, दुकान खोल दिया, गैरेज कर दिया, गोडाउन बना दिया, your building. So you're getting income, so you have to pay tax. Next para. Next Bhargav पढ़ा. Bhargav sound to बेचे है ऐसे. चिरागो sound to लोग कमी है ऐसे network करने. This head applies only when the person is the owner of the property. Yes, that's one of the most important thing, that this point comes that the person SSC must be owner of the house. This is a very important point. These things you remember. Yes. And either earns rent from it or has the potential to earn Very important line Bhargav has read. What I explained you. देखो क्या लिखा है. Either earns rent from it or the house has potential to earn rent. The house can earn rent but you are not earning. फिर भी टैक्स देना पड़ेगा. I explained ना. I've explained. It is not that only rent है तो टैक्स देना है, ऐसे नहीं है. The house has capacity to earn rent. बस इतना हो गया, तुम टैक्स दे दो. So the tax does not depend on what? Does not depend on rent. Depends on annual value. I'll teach you. Paro. In other words, even if the property is not actually rented out, its annual value, the amount for which it can be reasonably be expected to be let out in a year, is considered for taxation. Got it? You have not let out, but there is capacity of the house
टू बी लेट आउट, हो गया। ऐसे पढ़ा है, नोबडी इज देयर। बुद्ध बांग्ला, टैक्स तो दे दो। रेंट मिला ही नहीं, टैक्स दे दो। भराटिया नहीं, अरे भाई टैक्स दे दो ना, इनकम टैक्स दे दो। समझ गया? सो इट मे बी अर्निंग रेंट, मे नॉट बी अर्निंग रेंट, रेंट टैक्स দিব লাগিব। ओके, आरो लोग पढ़ाशोना कियोर ऊपर तो व्हाट इट डिपेंड्स, दिस रेंट डिपेंड्स ऑन व्हाट, पढ़ो, टैक्स डिपेंड्स ऑन व्हाट, जोर से भार्गव। Concept of annual value, Annual meaning value. and important. তোমরা শুনি আছা ন এইটো? ওকে, The এইটো annual এইটো value হলে of a তোমালোকৰ house চাৰিবা, property. পঢ়িব নালাগে, ইয়াতে গম পাই যাবা। হ্যাঁ, কোৱা। The annual value of a house property is the estimated yearly income that the owner could earn from the property if it were rented out, whether or not it is actually let out. It represents the potential earning capacity of the property. Very nice. So what is annual value? Annual value of the rent of the house property is the value which the house could earn if letted out. तो let out করা নাই, তথাপি এইটো annual value, ইনকাম ট্যাক্স দিয়ে দাও। চলো, The annual value is the basis of charging tax under the head income from house property. It represents the amount for which a property can reasonably be expected to be let out in a year, whether or not it is actually rented. next. In simple words, it is the expected rent that a property can fetch in a year. Even if the owner does not receive any rent, the tax law assumes that the property has the ability to earn a certain amount. And So income tax is charged on the capacity of the house to be rented. See, this idea you did not have. Before this I started. Before you came to this room, this idea did not get. And my target is that every time you enter this room and go out of this room, there should be some change in your mind, knowledge change. That is my progress every day. Okay? So he is saying there is a capacity of the house to earn rent, but owner has not earned any rent. भाड़ा पे दिया है तो ठीक है, नहीं दिया तो ठीक है, सो टैक्स दे दो। चलो भार्गव। the annual value is important because it forms the basis for calculating income under the head income from house property. Continue. After determining the annual value, certain deductions such as for municipal taxes and a standard deduction of 30% are allowed to arrive at the taxable income from house property. फिर लास्ट। Thus, the concept of annual value ensures that all properties are taxed fairly based on their capacity to generate income, not merely on actual rent received. So you remember annual value, how to calculate, I'll show practically. वो आज नहीं चाहिए। So annual value you get, this is the annual value, say 5 lakh annual value. From that you have to deduct municipal tax. Municipal tax is local tax. This doesn't go to central government. And remember, income tax is always charged by central government. You remember that. Income is central government. GST both state and center. You know it. And municipal tax is always local tax. Municipal tax. You know it. So that you have to deduct from the annual value. Then ultimately what figure you get? You get net annual value. From net annual value again you deduct 30%. उसके बाद में जो आएगा उसमें टैक्स आएगा। আৰু আছে কিছুমান, এইটো আজি নালাগে, মই তোমাক বুজাই দিম, অংকত বুজাই দিম। কিন্তু মই অলপ এটা বেকগ্ৰাউণ্ড পাই গৈছে ন, গম পাইছে ছাৰে বুজালে পাৰি যাম আৰু বাকীখিনি। এতিয়া থিয়ৰী লিখিবা আজি, তাৰপৰা থিয়ৰীটো আজি লিখিবা ন। মোৰ টিচিংটো বেলেগ, অকল প্ৰেক্টিকেল নকৰাও। আচ্ছা, এসেনশিয়াল কন্ডিশন थोड़ा बता दो, 1-2 पॉइंट। Essential conditions for taxability. For income to be taxed under this head, 3 main conditions must be met. Number 1, the property must consist of buildings or lands apparent thereto, land attached to the building such as a garage or garden. Okay, মানে যে building and the nearby land attached to the building, that is also building, house. This building and nearby that garage, it is also counted in building. These things you have to specifically learn.
Because if you go to become income tax officer, or if you are suppose tax consultant, you know all these things. Building means what? Every point there is something to know. Building means what? Is it only God? And logic is there. Or Sutal. Sutal to hai. It goes next. Taxpayer must be owner. नहीं तो ये नहीं आएगा. And property must be used by the बोलो last बोलो 3 number. Number 3. The property must not be used by the owner for his or her own business or profession. Okay. If the property is owned by the owner and used by the owner for own business, then ये heading नहीं आएगा. The house property should be outside owner's use. It is meant for rent. That will be coming under house property income. Clear? Okay. তুমি যদি লিখিবা আরো ক্লিয়ার হয়ে যাবো, আর অঙ্ক করলে তুমি এক্সপার্ট হয়ে যাবা। अच्छा, हाउस प्रॉपर्टी में भी कितना टाइप का हाउस प्रॉपर्टी सुनो? सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी, लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी, डीम्ड लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी, इतना तरीका का हाउस प्रॉपर्टी है। क्या क्या हाउस प्रॉपर्टी है? सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी, देन सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी पोर्शन। सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी इज द हाउस प्रॉपर्टी वेयर ओनर स्टेज हिमसेल्फ, स्टेज विद फैमिली। उसमें टैक्स लगेगा क्या? बोलो बोलो बोलो, टैक्स लगेगा? जिसमें खुद रहते हो, सेल्फ ऑक्यूपाइड, उसमें भी टैक्स देना पड़ेगा। दिबा ना कि टैक्स देते इटूते क्यों दिए बेटी? म्यूनिसिपल टैक्स दिन बेलक नहीं दियो, इनकम टैक्स नहीं दियो थे। सेल्फ ऑक्यूपाइड भाई, नो अर्निंग चांस। जिस घर में तुम खुद रहते हो वहां कहां रेंट आएगा? नो इनकम टैक्स। कैसे? हम ऐसे कर देगा, सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी एनुअल वैल्यू 0 हो गया कम। बट यू शो इट, सपोज यू हैव 10 हाउसेस, सो सेल्फ ऑक्यूपाइड जो है ना उसको तुम 0 लगा दो एनुअल वैल्यू, देन अनदर हाउस एनुअल वैल्यू इज दिस एंड कैलकुलेट। व्हेन सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस वैल्यू बिकम 0, तो इट बिकम 0 टैक्स। पोर्शन Sir, first self-occupied to him the later to. सेल्फ Okay. Types of house property. Number 1. Self-occupied property. Used by the owner for his or her own residence. Annual value is nil. That means no taxable income. Interest on home loan may be deducted up to a limit. ओके ओके, ये जो हम डिस्कस करूँ ऑनकोड, ये लेट आउट प्रॉपर्टी। सेल्फ ऑक्यूपाइड में ना उल्टा तुम्हारा टैक्स कमती हो जाएगा। आई शो यू दैट, उल्टा टैक्स कमी দিব। ये जो इतने ना लगे मैं अंक काम। अच्छा, लेट आउट प्रॉपर्टी थोड़ा बताओ तो क्या है? Later property rented to someone else. Okay, Annual value listen is one thing. calculated on I told you that you column. have to calculate the let out property का annual value. I told you ना? So that does not depend only on rent. That depends on annual value निकालने का टाइम में there are 4 points. এতে মই কৈ দিম, কিন্তু एक्चुअली মই ভালকে অঙ্ক কৰাম এটো। So 4 points এর উপর ডিপেন্ড করে। ভার্গবে কৈ দিয়া what are the 4 points which are to be taken into consideration for calculation of annual value of let out property? बताओ। Number 1. Expected rent. The एक्सपेक्टेड reasonable रेंट मीन्स इस हाउस में कितना रेंट हो सकता है? एक्सपेक्टेड है, पढ़ा लाइन टू पढ़ा। Expected rent is the reasonable rent the property can fetch based on market rates or municipal valuation. ओके, अनदर फेयर रेंट इस घर का सिमिलर अनदर हाउस इज देयर नियर बाय, उसका भाड़ा कितना है? वो जितना है इसका भाड़ा इतना होना चाहिए, वो है फेयर रेंट। दूसरा वैल्यू पढ़ा, इट एक्सपेक्टेड इस हाउस के इतना भाड़ा होना चाहिए, इतना लास्ट ईयर भी मिला था, इस पर भाड़ा होने से इतना मिलेगा। वी एक्सपेक्ट दिस मच रीजनेबल रेंट जितना होना चाहिए। एंड फेयर रेंट मीन्स इस हाउस का सेम टू सेम सिटी अनदर हाउस, उसका रेंट कितना है, उसका रेंट इतना है तो इसका इतना होगा, फेयर रेंट। समझ गया? नंबर 2, नंबर 3 बताओ। Standard rent. Standard rent is the maximum rent fixed under the Rent Control Act. हर स्टेट में एक रेंट कंट्रोल एक्ट होता है, और रेंट कंट्रोल एक्ट में गवर्नमेंट में ठीक करता है कि इसमें कितना रेंट होना चाहिए, दैट इज स्टैंडर्ड रेंट। एंड नंबर 4, Actual rent received. नंबर or 4 में आ received. रहा है एक्चुअल रेंट रिसीव्ड, व्हिच यू टोल्ड द फर्स्ट टाइम दैट रेंट मिलता है तो टैक्स देना पड़ेगा, वो नंबर 4 में लास्ट में आता है। मीन्स रेंट मिलने से भी ठीक है, नहीं मिलने से भी ठीक है, लेकिन टैक्स होना पड़ेगा।
I'll teach you. And another type of house property तुम बताओ क्या है? Deemed let out. इसको थोड़ा पढ़ लो, first para only. A deemed let out property refers to a house property that an individual owns but does not occupy for self-use and is also not actually rented out. For income tax purposes, such property is treated as if it were let out, and the owner is required to pay tax on notional rental income, even though no actual rent is received. समझ गया? सेल्फ ऑक्युपाइड, डीम्ड लेट आउट, भाड़ा दिया भी नहीं, खुद रहा भी नहीं, तो डीम्ड हो गया. सो ये सारी चीज वी विल डिस्कस वंस अगेन, एनुअल वैल्यू एंड ऑल दिस थिंग्स वी विल डिस्कस. सो हाउस प्रॉपर्टी के इनकम कैसे करता है अभी नहीं चाहिए, आज नहीं चाहिए. आज हम लोग इसका डिटेल तुम लोग तो लिख लेगा ना नेट से निकल के, वो किताब से यू विल मेक द नोट्स, उसमें अदर थिंग्स विल बी कमिंग टू यू. सो डोंट वरी. सो नाउ दिस हेडिंग इज से ओवर. दिस हेडिंग इज